We lost our wicket before that. Shrews visualising 141 for 6. Been brilliant. Afghanistan have been really good. They've been up for the contest. Their skipper talked all about 300. That was what they wanted, 300, and then trying to defend it. Feel like their spinners can defend anything around that score. So far, looking out well for them. Not over yet. Players in the middle, players to come. I just love how every ball there's meaning to it. Whether it's Rashid Khan bowling or in the circle, out in the boundary, every Afghani player is engaged in every single ball, ready to do something special. Well, going back to what I was asking you, was there a... Yeah, so for me, the main ball that I was just setting up for was Rashid Khan's wrong, and so I would bat on off stump, and I'd be mainly just hitting the ball dead straight to mid-on. And that was my way of getting off strike to him, which I felt was low risk. That ball, that's the ball that I was setting up for, knowing that that's his weapon to be able to get the ball to come in. In the end, if he did spin a conventional leg spinner past me, then, you know, I was okay with getting caught in slip. Was the one that was coming into the stumps, which has always been his biggest weapon. And the one ball, that's the ball that I was setting up for, knowing that that's his weapon to be able to get the ball. In his third and fourth over, Rashid Khan always went wicket hunting if he hadn't got wickets in his first couple. So that's when the scoring options did come more available. He became a little bit slower, he got a bit fuller, and that's normally where I tried to capitalise on his spell, with the first 2 overs were normally very difficult. Well, that one is a maiden over, and a good one at that, 141 for 6. European technology से बने डॉलन्स LED TV अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ होम, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। एक धूप में जागेगी खेल की उमंग, चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Run rate will come down a touch. Makes things very difficult. Means that get into that group. 2 losses in one window will be group there. Bangladesh, Sri Lanka yet to win a game. Afghanistan would jump up, of course. If they were to win this encounter. As I say, still enough overs left for Harry Brook, Chris White, Sadil Rashid, Topley and Wood. I'll keep harping on this because I'm just loving the energy in the field that Afghanistan are creating. Every single ball. It's absolutely brilliant to watch. So often with Afghanistan in 50 over cricket, Nabi and Rashid have to do the wicket taking as well as keeping it tight. Well, they're in a position tonight where they don't have to do that exactly because there have been wickets taken before they've come on to bowl. When it comes down to energy in the field, that there is a choice. You do have a choice as an individual of whether you really want to be fully engaged into every ball or whether you don't. You know, Shane Warne always used to say that fielding is an attitude, and you do have a choice. And right now the Afghanistan team is really choosing to be fully engaged. And it's the one thing that I really want to see from the Australians that has, and you can see it in the field.
just don't have that urgency and that attitude they need. Oh, how close, not close enough for Rod Tucker. It was full, lunged forward, it's not going. It's awesome to watch Mohammad Nabi go about doing his thing. Every time he's tossed the ball up and has hit the seam, there's been enough turn for him. Good on. 30 gone, 143 for 6. एक और कप चाय जपान दानेदार शुक्राना करूं अल्लाह का सूफी मैं सूफी जो नाम है एतमाद का To go here in Delhi, Arun Jaitley Stadium. Afghanistan are in charge at the minute. 42 required. Harry Brook, young superstar of English cricket, holds their hopes in his hands with his blade, along with Wokes and those to come. Jeeva's back. Slowness of the ball, knew it was going to turn a lot more, and it's going to miss the stumps. And as expected, missing by a distance. Inch one, clean pickup, could have been all sorts of trouble. Couldn't get it in his hands. Ibrahim. When you've got full intensity in the field, create indecision by the batters with the running between wickets. Ibrahim, he's got a clean pick up there. Oh, could have been curtains. And that's what the energy creates, indecision. Excellent stuff from Afghanistan. Oh, it's gone through. You just big up their fielding. The last little while, it's been really good, but just a couple of fumbles in a row. Harry Brook, the first little part of his innings, he's very, very composed. Little help, goes all the way, swings it. Lovely free-flowing swing of the bat from Harry Brook. It's been very impressive from Harry Brook. Every time there has been a loose ball, which there haven't been a lot of them, he has capitalised on it. With his high grip there, he's able to get some great elevation with extra width with those wrists as well to make sure that ball did carry to the boundary. First 6 of the innings, that one there to Harry Brook. That's how good Afghanistan have been so far. 31 overs gone, 6 wickets down, 154 runs on the board for England. They need further 131 and time for drinks. First 6 of the innings, that one there to Harry Brook. That's how good Afghanistan have been so far. 31 overs gone, 6 wickets down, 154 runs on This drink break is brought to you by Vital Tea, Vital Pure, Zindagi Jio. एक धूप में जागेगी खेल की उमंग, चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो
जिंदगी जियो एक एक धूप में जागेगी खेल की उमंग चाय और क्रिकेट वाइटल पियो जिंदगी जियो सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। जीतो स्पेशल क्रिकेट प्राइजेस। अपने स्ट्रॉन्गर पेप्सी के पीछे कोड को स्कैन करो और पहनो जुनून का रंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। एक एक धूप में जागेगी खेल की उमंग चाय और क्रिकेट वाइटल पियो जिंदगी जियो। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 100 GB डेटा सिर्फ 500 रुपए के लोड में। ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं। मौसमी एक्सपर्ट जोंकिंग मंथली प्रो मैक्स से एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे, 200 GB डेटा, 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 1600 रुपए में। एक एक धूप में जागेगी खेल की उमंग चाय और क्रिकेट वाइटल पियो जिंदगी जियो। HPL इस्लामिक बैंकिंग, मुतवाज़िन जिंदगी के लिए। ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन नेस्ले नीडो, अच्छाई से बनो अच्छाई के लिए। From Nestle. मेरी बॉलिंग की तरफ फैसल इस्लामी तेज तरीन रेमिटेंस अकाउंट से पैसे वसूल करें, तेज तरीन, महफूज तरीन, करीब तरीन। फैसल इस्लामी। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स LED TV अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Dismissal for sure today. You have to say, has to be the English captain, Joss Butler. And you see what Naveen ul Haq has done. His top ball is the one that goes away, but the wicket ball was the one that came back in. Now it's not the what you do, it's how you do it. Just look at the same position for the outswing, the one facing first slip or second slip upon release. And this one will just go away, and just have a look as the ball is released for the one that comes back in. He'll face fine leg. Subtle change in wrist position. Gets the ball bang on, in swing, hits the pitch, maybe a crack, gets in. It's goodbye, Joss Butler. Yeah, and it helps if you put a little bit of paint on one side too. It just makes it a bit heavier, sort of helps it dip in a bit. You always work for the fast bowlers, Dooley. That's brilliant, I loved it. More paint on the ball. 63, so much resting there along with Chris Wokes at the crease at the moment. Mujib has bowled 7. Doesn't look Faruqi and Naveen with a wicket apiece. So bottom line is what is required for England. Not easy at all. This partnership in its infancy, 16 from 24. Chat coming from Rashid there. It's good to have different voices. Just watch his wrist position, Dooley. As a fast bowler, just facing fine leg, just to get the skill to back the ball with that kind of backspin, hit the crack, comes in. To get a big batter like that out, neck and crop bowled is always a good feeling. No better feeling from a bowling point of view to be able to deceive a quality, high quality batter like that. He's missed that by a long way. Hasn't just missed it, he's missed it by 3-4 inches. And deceiving a player of the quality of Joss Butler like that is one to tell the story more and more, and it gets faster and faster as the years go by. Swings more. It's going to be doing well to swing more on that one as well. It just started to swing and kept going in off the wicket as well. Naveen ul Haq's got a big job now as well. He did a great job to start with. It's a big job now to try and dislodge Harry Brook, who's looked very, very good. Once he got his innings going,
It's been very, very impressive. Very low risk batting. Certainly put the loose balls away that have come his way. Mid-wicket, mid-off. Extra cover, backward point, and a fine leg. One's inside the circle. Very interesting bowling change, and I say that because for Chris Woakes, Naveen Haq is a good matchup. He brings the ball back in, he's able to straighten the ball from there. There's a great chance because Chris Woakes is a highly off-sided player, loves his cover drives, and that's the ball that could really get him into trouble. The one that from an angle wide of the crease coming in and just straightening after that. If you get sucked into that drive, there's always a chance you can nick one. Yeah, the other thing about Naveen is he's got a deceptively sneaky bouncer. Don't forget about that in these skiddy conditions when the ball's getting a little damp. It comes on a touch quicker. Don't forget about that bouncer either. And the beauty of Naveen is because he's a bit different to what you normally see as a right-arm bowler. He's a little bit wide of the crease. He mainly sort of comes into a right-handed batter, but he can obviously swing the ball and straighten it down the line as well. It just means that a batter hasn't seen much of Naveen Haq. Like Woakes might not have seen much of him. It's going to take him a little bit of time to be able to find his groove, be able to line up the angles that the ball's coming, and that's where the deception can really work for Naveen to try and especially beat him through the inside like he did with Joss Buttler. Pace off, but that is really good timing from Woakes. Waited for it beautifully. Chris Woakes, he just got in a really nice early position there. Just set his feet. Just timed that beautifully. That front elbow going straight through the line of the ball. Off cutter just sat up a little bit. As DK mentioned earlier, Chris Woakes, his favourite zones, 20%. Cover to backward point and third man region, 24% of his scoring zone as well. Oh, good pace this time. Beats the outside edge. Yeah, right now Naveen doesn't need to be bowling the off-speed balls. There's enough going on with this ball. Brand new batter. Woakes is still trying to find his rhythm on this wicket. He's going to bowl any variation, just bowl cross seam and just keep hitting that wicket as hard as he can. स्पेशल क्रिकेट प्राइजेस अपने स्ट्रॉन्गर पेप्सी के पीछे कोड को स्कैन करो और पहनो जुनून का रंग. Naveen's body language, it doesn't seem like it's just a general conversation either. There's a little bit more intent behind it. They've been having a go at each other since the warm-up game. He was very unhappy with how Gurbaz was keeping in the warm-up game. Now he stood at covers and he wasn't happy that he was walking in a bit too much for his liking. He felt that he needed to stay much further back. Now he's pushed mid on to long on and brought fine leg out. Now he'll turn to Gurbaz. There's a little shy at the stumps. Good work from Nabi. Ends the over 160 for 6. Fantastic. Level ही हो रहा है. Point in time, he's still trying to create some chances and do something special for his team. Such a balanced situation right now. Just needs something special to break this partnership.
Abbas probably twisted his ankle a bit, and yeah, he just rolled on it a bit. Always a tough one that he had to go all the way from Cowell to long on, and then he decided that's that. He's leaving the field. Well, he copped an absolute earful, and then he twists his ankle. Now he's off the field. He was moved. He was banished from cover down to long on. Oh, really close. Really close. And gone. His appeal already. I'm not sure whether he got an edge on it or not. We will find out. TV umpire to director, we have a review for LBW. Original decision is out. Kick the front foot, and it's a fair delivery. Front on first base. Tigers missed the bat. We'll confirm with Aldridge. Yeah, clearly missing the bat, going onto the pad. You can go with ball tracking when ready. We are, original decision is out. Impact is in line. Wicket's missing. Go back on the field. Side count gets to change the decision. Not out. Signal now. Yeah, change your decision. Shafadullah, the umpire from Bangladesh. Tight, just that turn. It wasn't the leg spinner, it was the one that was carrying on and missing leg. Yeah, just skipped on. You can see why the Afghanistani team thought they were in for a good chance there. Just skipped off the wicket, kept it a little bit lower. Makes us going to have to be so careful of that. Oh wow, that was tight. Be careful going back to that. That's very close to clipping that back pad as well. Goodness me. It really does bring into play the fact that some teams, some players still don't quite get. Don't waste reviews. Liam Livingston absolutely burns a review. Didn't have one left at that stage. All sorts of trouble. He burnt one when he was absolutely plumb in front. Terrific over from Mujib, and eventually it has paid dividends with the wicket of Chris Wokes. They're running around the park already. Don't celebrate just yet, gents. You can see why Mujib is so excited. What a setup. The few of that over just working over Wokes. Just did it again. The wrong one. And he was off and racing Mujib. You don't get excited about that, you will never. So impressive, Mujib. Wokes has to go 9 of 26 balls. England now 160 for 7. आज का कड़क चैलेंज, कड़क चाय का कड़क दाव निकाल पाएगा एरियल जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाव सिर्फ एक धुलाई में। नया लाइफबॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू प्याज की ताकत लिए। नया लाइफबॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू प्याज की ताकत लिए। एक कप है कितनों का बहाना, एक कप तुम्हें एक और कप चाय, एक और कप चाय टपाल दानेदार। 7 down now, 160 on the board.
have a laugh about it now. Harry Brook and Adil Rashid, the best of mates. He and Moeen Ali. Figure out a way, but at the moment Afghanistan are all over England here in Delhi. This magnificent crowd that have been a good voice throughout the day are enjoying it even more. He's going to have to be the man to support Harry Brook. He's done a great job so far, Harry Brook, but he needs some partners to stay with him. Former England international Jonathan Trott in charge of Afghanistan. He will know operations don't come until they are all out. Great setup there by Mujib. The previous one, carom ball. This one, the googly. Folks not sure which one it was. Great pictures there. The sheer joy, Mujib and Afghan boys. So cool to watch. Been up and about. Every reason to be up and about as well. It's been exceptional performance so far. Been relenting with the ball. Also in the field. Side for Port. Lovely way to get things going for Adil Rashid. Rashid got nicely into off stump there. Missed it between curtains, but he did not miss this. It's come right from the middle of the bat, deflected behind square leg. It's only fine leg out on the fence, so it raced away to the boundary. Again, one of his favourite areas is that backward point region. Racking my brain and talking to our stats man about the great World Cup upsets, great 50-over World Cup upsets, and which ones spring to mind straight away. Zimbabwe beating Australia in 1983 under the great play of Davy Houghton. Zimbabwe. Bangladesh over Pakistan in 99 in England. Another one. Ireland beating England in Bangalore. Massive. Afghanistan want a piece of it. They want a piece of the great upsets. And they find it. Bangladesh beat India in 07. Trinidad. DK, you were in the squad for that one. Sorry to remind you, if you'd have played, they wouldn't have won. A good memory there, for sure. Side edge. Kenya beating the West Indies in Nairobi, 1986. 1996. Phil Rashid, the first couple of balls, has really found his groove on this wicket. He's going to need to continue to do that over and over again. Give England a chance of chasing these runs down. Apologies, it wasn't. It was in India, World Cup in '96. It's a disappointed moment as England are concerned.
See some long faces at the moment, the English fans and also the English cricket team. With Harry Brook and Rashid in, those faces can turn around. It's going to take some time and a lot of good work. Kenya West Indies match was actually in Pune, which is not far away from Nairobi anyway, so it's all good. 34 gone, 168 for 7. हाँ भाई और करनी है रेस चला जा उड़ जा ये बस्तियां तो चलती रहेंगी इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए हमने लिया स्टेट लाइफ सेहत जिंदगी प्लान स्टेट लाइफ हमेशा साथ निभाए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एलईडी टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है G was brilliant in that last over, picked up the wicket of Chris Wokes. In the fantasy game from Manula Gurbaz, courtesy of his fine batting in the first innings. Mujib is up there, Root, Rashid and Brook at the moment. Struck and back-to-back overs. Oh, you can see the Afghan team celebrating, and in the background the Afghan supporters as well. The most important wicket for the moment was Harry Brook. The edge and a lovely catch there by Ikram Ali Khil. It's been good tight bowling from the Afghani bowlers. For the moment, Harry Brook goes for 66. England 169 for 8. ट्राई पेंटे जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके हेयर फॉल को इग्नोर ना करो सॉफ्ट करो विद पेंटे सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम सॉफ्ट सर्फ एक्सेल दागों पर सख्त कपड़े पर नर्म एक धूप में जागेगी खेल की उमंग चाय और क्रिकेट वाइटल पियो जिंदगी जियो बिजनेस बड़ा हो या छोटा हर बिजनेस को आसान बनाए HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL Their fans can see some light at the end of the tunnel. Mark Wood joins Adil Rashid. It has been a phenomenal bowling and fielding performance for the most part from Afghanistan. Mohammad Nabi was good with the ball. Fazal Haq Farooqi was outstanding with his new ball burst. Rashid Khan has made his presence felt. Mujib has been good up front and down the back here. It's hello to Lisa Staleka and Sean Pollock. Yeah, it's been real quality from Afghanistan the whole way through. Everyone's played their part. It's a fantastic catch. And he's off. Almost a bit like Imran Tahir used to do back in his day. Get the charge in once you picked up the wicket. You see Mohammad Nabi at the back, slowly trotting after him. Just over. Just cleared. Mid-off Joss Butler. A little bit animated and nervous.
Harpwood in these situations is often thoroughly entertaining. I don't think he's going to play any other way. Harpwood in these situations is often thoroughly entertaining. I don't think he's going to play any other way. He's still got 3 overs up his sleeve if needed. 1 for 23. Gurbaz batted magnificently tonight before he was run out. Action before as well to Adil Rashid against Rashid Khan. Yeah, it's a lovely shot. Sometimes a change of end can do this to a bowler. Takes him a little bit of a while to settle. But I only think this must be the case because it was a real half-tracker from Rashid Khan. You don't often see that. Beautifully played by Adil Rashid. They're really backed into a hole, haven't they? Original run rate was 5.7 and it's elevated to 7.3. And whilst there's only 2 wickets left, these two just need to keep an eye of the run rate. What can they do to find the boundary? How can they put some pressure on Afghanistan? How can they eat away into 107 runs required off 87 deliveries? There was a noise. Is it bat hitting ground? I think they've got to be aware that the googly's on the cards. He's beating the outside edge and only a matter of time before he tries to target the stumps. They down in the gap as well. So the over ends with the boundary as it started with 182 for 8. पैम्पर्स पैंट जिनको पहनाना बेहद आसान। पैम्पर्स में है लोशन विद एलोवेरा जिससे बेबी को मिले रैश प्रोटेक्शन ऑल डे एंड नाइट। तो आज ही ट्राई करें पैम्पर्स पैंट्स। And he dropped it! ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं। मौसमी एक्सपर्ट जोंकी मंथली प्रो मैक्स से एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे, 200 GB डेटा, 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 1600 रुपए में। Difference in having watched Afghanistan play India. They posted 272 for 8 and you felt that they were probably about 30 or 40 runs short. They could have gone bigger but they fell away with the wickets. This time they had a bit of the tail wagging. And with Ikram coming in as well, he was able to kind of bolster the middle to late order with that half century, and he's kept exceptionally well in the second innings. He's been a great inclusion for them.
Well, who I think we can't understate here as well, the guy with the ball in his hand when he had a bat in his hand. Remember watching him go to work and taking 18 off and over Mujib. He finished up with 28 from just 16 deliveries. Now he's been very, very good, Mujib, with the ball. Starting things off well with Fazalhaq Faruqi, and now coming back later on and picking up wicket. Oh, he's thrown it away, he's thrown it wide. The issue is the men backing up and probably where he actually threw the ball. They were going for the line, he was about to throw it. He probably missed by a good 3 to 4 metres. The fans are happy, the English fans that is. Five runs, it means now that England's ask is now less than 196 required. Need that man, Mohamed Nabi, just to keep everyone calm and relaxed. Nice defence at the end, but a successful over for England. 8 runs off at 190 for 8. Fruit tomatoes. Control up front and through this middle passage. There's plenty of voting that goes on for player of the match. Majid must be in the hunt. He must have his name in the hat, and hoping to end up for laurels for that performance. But his team still need another 2 wickets to try and close out this match. Fazalhaq Faruqi is back, coming round the wicket to Mark Wood. He was exceptional with the new ball. He was able to swing it and cause absolute havoc at the top. But you would expect that the field that's set, 4 fielders out deep, square of the wicket. He's going to target the stumps, change of pace, Yorker even, if he wants to try and pick up just 1 more wicket. One thing I was certainly impressed was Harry Brook, and I wondered what he was doing differently compared to the other English players. And when you look at his contact point, he actually plays the ball really late. That's his dismissal. But where he scored a lot of his runs, his impact's either out in front or really late. That gives him the most amount of time to see the ball and adjust. That's a top shot. It really is a little hallmark of class about that shot from Mark Wood.
Yeah, talk about playing the ball late. We saw a couple of examples of this from Harry Britt throughout his innings. He played 2 exquisite shots behind square on the offside. It's beautifully played. I mean, there was nothing wrong with that line. Yes, he's bowling from wide of the crease, so it probably opens up the offside, and Mark Wood thinks that area is an area where he can accumulate. But the way he waited and just guarded it, beautifully played. England needing 90 off 74. It's getting a little bit late. One way they can tackle that is certainly by getting a boundary every over and then a couple of singles. And the boundaries are coming without taking too many risks as well. It's hope. There's a little bit of hope in that dugout. You get the feeling that Afghanistan are maybe, and understandably, getting a little bit excited by the situation. They know that the end is close. 2 more wickets and they can celebrate a famous victory in this World Cup. But the plans that they've used so far to get to this situation is what they need to keep on doing. Not force home the issue. Just hold your nerve and things will fall into place. When they go back to Rashid Khan. 2 overs left and he bowled best from the opposite end to Fazal Haq Farooqi. 196 for 8. बड़ी भूख लगी है और बड़ी बड़ी भूख, बड़ा पैक, बड़ी बचत सिर्फ किन्नौर बड़े पैक्स के साथ। For 51 for Mujib, the best so far. Nabi was also outstanding, 2 for 16 from his 6 overs. Rashid with 1 for 32 and 2 overs up his sleeve now that Mujib has finished his quota. Rashid's back. Quite right too. Slip in place. These 2 are going along nicely. 28 off 23. He's been able to rotate the strike, find the boundary when required. And the longer that they stay out there and slowly chip away, we'll start to see more discussions like this happen out in the middle for Afghanistan. How are they going to find their 9th wicket? Do they sit on Rashid Khan for the 2 overs, or do they play him naturally, Polly? Mark Wood only knows one way. And Adil Rashid's pretty similar. They'll be backing themselves thinking that they can take down the mark of Rashid Khan. There was a little inside edge involved. One bowling. Back to his favoured end, and Rashid Khan has struck. And the key to this delivery is length. It's nothing different to what he would have bowled to the top order. He gets it in the right area, a little bit of grip, outside edge, good catch by Nabi at first slip.
And the end is now for Afghanistan. The celebrations are almost there. They can almost begin. They have their ninth. Rashid goes for 20 of 13. He played nicely. 198 for 8. सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़े पर नर्म। PSO Deomax, पाकिस्तान का पहला प्रीमियम हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल। परफॉर्मेंस ऐसी कि दुनिया चले। एक कप है कितनों का बहाना, एक कप तुम्हें एक और कप चाय, एक और कप चाय, टपाल दानेदार। सुपर चार्जर किचन इसकी फील्ड, वहाँ झंडे भी ये गाड़ा, हाल ये बाप अपने गेम का तो विकेट भी उड़ा। Introducing the all new KFC Zinger Supercharger, जिसकी हर बाइट में मिले एक स्पाइसी चार्ज, क्योंकि ये बाप है गेम का। Now of one of the biggest upsets in World Cup history. Rashid had played well since coming to the crease, but pushing forward there and poking to slip. England 9 down. Afghanistan have handled their spinners brilliantly. The captain has brought his spinners back just at the right time. And with runs on the board, they've enjoyed themselves. Reece Copley now joining Mark Wood. 198 for 9. Still 87 away, England, and seemingly a mountain to climb. There's almost like a little crease on the surface. A good length there for Rashid Khan. I noticed when there was the LBW and the review, they all landed in a similar area, and that's his ideal length. And that was a brilliant delivery. Had the 2 overs left, they brought him back in. It just took him the 4 deliveries to have an impact. Oh, has it been put down? I think it carried. Cover had been brought up inside the circle to try and keep Topley on strike at the non-striker's end for the next over. It may just have carried. 199 for 9. तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लगातार डेटा के लिए वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 100 GB डेटा सिर्फ 500 रुपए के लोड में। Just died right at the end. You're always going to get pure emotion from Rashid Khan. Fazal Haq Faruqi, it will be, bowled excellently with the new ball at the start of the innings. Found some extravagant swing at times and held a beautiful line, and he has a chance to finish things off. Oh, was perilously close from doing so. Topley seems to want to show a lot of his stumps. He gave himself some room in the first delivery against Rashid Khan, and once again there he exposes those stumps. The skinny nature of Faruqi, you would do think that if he lands one on a decent length and gets it somewhere near the top of off stump, could be the end of the game. Somehow Topley digs that out and gets Mark Wood on strike, and that single brings up England's 200.
one thing that has certainly been in favour of Afghanistan is that this pitch turned a lot more than what people expected based on the first two games. The fact that they put on the board 284, just 4 shy of their highest score in Men's Cricket World Cup, allowed their spinners target to bowl. And then this guy was able to do some damage at the top as well. Chipped in the air on the leg side and for a single. It has turned a little, but it's not a huge ragging turner here. It's not as though England have been undone in difficult conditions. This has been a good surface that has just held a little bit for the Afghan spinners, and that graphic there is a measure of how big a shock this would be if Afghanistan can get over the line. The victory was against Scotland, but they've held the pressure throughout. You just had that feeling all the time that England were battling to get balls away. Fine edge past the wicket keeper, 4. Topley just chancing his arm. I think it's length. You've got to hit length. It's gone full, and Yorker was nudged away on the offside, and this one once again is slightly overpitched and following Topley. I think it's length. He'll hit the top of the stumps. That would be the lethal delivery. He's a skiddy customer. Yeah, just stay in the moment. It's so difficult when you're on the brink of a famous win not to be thinking ahead of the celebrations to come. Stay in the moment. Smears that down the ground. Reece Topley backing away, cross bats it, finishes with consecutive boundaries. 1 ball to come of the 40th over, 209 for 9. Now this is a quality flat bat here from Reece Topley. Once again giving himself room, clearing that front leg. The other option at this time, and it's kind of underutilised these days, when the tailenders are going, quality slow delivery. Roll your fingers across it, and invariably they can't adjust and pop it up into the air. Consecutive boundaries, the last of them with just a hint of quality from Reece Topley. 213 for 9, 14 off the over. And he dropped it! ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं। मौसमी एक्सपर्ट Zonky मंथली प्रो मैक्स से एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे, 200 GB डेटा, 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 1600 रुपए में। 184 Afghanistan put on the board. Gurbaz, a real star there, 80 off 57. Jeev also chipping in with bat and ball. Well, we're into the final phase of this innings, the final 10 overs of the match, an extraordinary match in many ways. This nomadic team, Afghanistan, can't play at home, fraction of the resources that their opponents can boast, and they're on the brink of a famous victory. England still needs 72 from the last 10 overs, 1 wicket to play with. It's difficult to quantify, isn't it, Evans? You understand exactly what this will mean to so many people around the world. Take on the reigning champions and end up on top. Cricket and sport has played such a role in nation building really in Afghanistan. It's the cricket team that people know about when they think of Afghanistan, and this would just add just another page in the remarkable history, which is a relatively short one as far as cricket goes in the country. In their history. This has been a remarkable evening here in
They've outplayed England, and a huge smile on the face of their coach Jonathan Trott and their players now who gather in a huddle, glum faces. ट्राई पेंटी जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉर्ट करो विद पेंटी। नया लाइफ पॉइंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, प्यार की ताकत भी है। एक धूप में जागेगी खेल की उमंग, चाय और क्रिकेट, वाइटल व्यू, जिंदगी जियो। बेफिक्री से करें अपनी सेविंग राशि। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले अफ़गानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया है। इतनी बड़ी टीम को यहाँ पर बहुत ही बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अफ़गानिस्तान के स्पिनर ने यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को 215 रन पर ढेर कर दिया है। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है स्पिनर की तरफ से और इस कमाल की गेंदबाजी की वजह से स्पिनर की वजह से ही दोस्तों इंग्लैंड की टीम मैच हार चुकी है अफगानिस्तान के हाथों। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली है। अगर बात करें दोस्तों आज के मैच की, तो आज के मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम ने अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। अगर बात करें अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की, तो गुरबाज ने आते ही लाठीचार्ज करने का फैसला किया और 57 गेंदों पर 80 रन की दुमदार इनिंग खेली। इब्राहिम जादरा ने 28 रन किए। रहमत शाह फिर नाकाम होते हुए दिखाई दिए। शहीदी ने 14 रन की इनिंग खेली और इसी के साथ ही अजमतुल्लाह ने दोस्तों 19 रन की इनिंग खेली। इकराम अली खिल ने 58 रन किए जबकि मोहम्मद नबी ने सिर्फ 9 रन किए। इसी के साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान की टीम की तरफ से बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की गई थी। मुजीबुर रहमान की तरफ से 16 गेंदों पर इन्होंने 28 रन किए और अपनी टीम को लगभग 284 तक पहुंचा दिया। अगर बात करें गेंदबाजी की, 58 रन किए जबकि मोहम्मद नबी ने सिर्फ 9 रन किए। इसी के साथ ही दोस्तों अफगानी का सामना करना पड़ा। रेस टोपली ने 8.5 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसी के साथ ही सैम करन को बहुत ज्यादा धुलाई का सामना करना पड़ा। 12 के इकोनॉमी रेट से दोस्तों 4 ओवर्स में इन्होंने 46 रन दिए। आदिल रशीद ने 10 ओवर्स में 42 रन दिए। मार्क वुड ने 9 ओवर्स में 50 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लिविंगस्टोन ने 10 ओवर्स में 33 रन दिए और इसी के साथ ही जॉय रूट ने 4 ओवर्स में 19 रन किए। तो टारगेट था 284 रन का और इंग्लैंड की टीम ने करने थे 285 रन। दोस्तों जब इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरी तो आते ही इनकी विकेट्स गिरने लगी। सबसे पहले जॉनी बेस्टो 2 रन पर आउट हुए फजल हक फरूकी के हाथों। डेविड मलान मोहम्मद नबी का शिकार हुए 32 रन पर और इसी के साथ ही जॉय रूट की विकेट भी बहुत जल्द गिरी। अगर देखा जाए दोस्तों तो जॉय रूट ने यहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 11 रन बना पाए। हैरी ब्रूक ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन वो भी आखिरी ओवर्स में चलते बने। जोस बटलर भी नवीनुल हक का शिकार हुए और इसी के साथ ही दोस्तों इंग्लैंड की टीम की आहिस्ता आहिस्ता विकेटें गिरने लगी। अगर देखा जाए दोस्तों लिविंगस्टोन वो भी नाकाम रहे, लगातार तीसरे मैच में नाकाम होते हुए दिखाई दिए। 10 रन बना पाए। सैम करन ने भी 10 रन किए। क्रिस वॉक्स ने 9 रन किए। आदिल रशीद सिर्फ और सिर्फ 20 रन कर पाए। मार्क वुड ने 18 रन किए जबकि रेस टोपली ने नॉट आउट रहे और 15 रन करने में कामयाब रहे। तो दोस्तों इसी के साथ
साथ ही इंग्लैंड की पूरी टीम 215 पर चलती बनी। अगर पॉइंट्स टेबल की यहाँ पर बात कर ली जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर नजर डालना भी बहुत जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया की टीम यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो कितने मैच जीते हैं, 3 मैच खेले हैं, तीनों ही जीते हैं। पहला मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से आज 6 विकेटों से जीता था। दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी थी और तीसरे मैच में इंडिया ने 7 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अब इंडिया और बांग्लादेश का मैच है 17 तारीख को। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन वाली टीम की दोस्तों, न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ चुकी है। न्यूजीलैंड ने पहला मैच 9 विकेटों से जीता, दूसरा मैच 99 रन से जीता, जबकि तीसरा मैच 8 विकेटों से जीता था। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर यानी साउथ अफ्रीका की टीम की। साउथ अफ्रीका की टीम भी काफ़ी ख़तरनाक है और साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। पहले मैच में 102 रन से श्रीलंकन टीम को शिकस्त दी थी और दूसरे मैच में अफ्रीका ने 134 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की टीम की दोस्तों। चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम दिखाई दे रही है, जो कल का मैच बहुत ही बुरी तरह से हारी थी। पाकिस्तान ने पहला मैच नीदरलैंड से जीता था 81 रन से। दूसरा मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका से 6 विकेटों से जीत लिया था, जबकि तीसरे मैच में बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लगभग 7 विकेटों से यहाँ पर पाकिस्तान की टीम हारी थी। और चौथा मैच दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 20 तारीख को होने वाला है। तो पाकिस्तान को वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर आगे जाना है। तो इसी तरह दोस्तों इंग्लैंड की टीम की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। 3 मैच खेले, 1 जीता और 2 हार चुकी है। इंग्लैंड की टीम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दिखाई दे रही है। पहला मैच 9 विकेटों से न्यूजीलैंड के हाथों से हारा था। दूसरे मैच में बांग्लादेश के हाथों 137 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और तीसरे मैच में 69 रन से अफगानिस्तान के हाथों आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चलें इंग्लैंड की टीम बहुत ही बुरी तरह से 2 मैच हार चुकी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम बाहर भी हो सकती है। और इसी के साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान की टीम 6ठे नंबर पर आ चुकी है। 3 मैच खेले, अफगानिस्तान की टीम भी 2 मैच हार चुकी है और सिर्फ 1 ही मैच जीता है। पहले मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वो भी बांग्लादेश के हाथों। दूसरे मैच में 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वो भी इंडिया के हाथों। लेकिन आज अफगानिस्तान की टीम ने सबसे तगड़ी वाली टीम को हराया है, यानी इंग्लैंड की टीम जो 2019 के वर्ल्ड कप की फातेह थी, लेकिन आज अफगानिस्तान के हाथों हार चुकी है। इसी तरह दोस्तों बांग्लादेश की टीम यहाँ पर 7वें नंबर पर दिखाई दे रही है। श्रीलंका की टीम 8वें नंबर पर दिखाई दे रही है और इसी की तरह दोस्तों नीदरलैंड की टीम 9वें नंबर पर, जबकि दुनिया की बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पर दिखाई दे रही है। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच भी है दोस्तों 20 तारीख को। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? फिलहाल आपको बताते चलें टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी। पहले नंबर पर फिलहाल इंडिया की टीम है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जबकि चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि आज के मैच में अफगानिस्तान की टीम ने दोस्तों इंग्लैंड की टीम को बहुत ही बुरी तरह से बीट किया है, लगभग यहाँ पर बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है, 69 रन से हरा दिया है। अफगानिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 284 रन किए थे। अफगानिस्तान की टीम भी पूरी की पूरी आउट हुई थी 49.5 ओवर्स में, जबकि इंग्लैंड की टीम ने दोस्तों बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया और पूरी की पूरी टीम अफगानिस्तान के जादूगर स्पिनर्स का शिकार होती हुई दिखाई दी। और अब बताते चलें अब बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, लगातार 2 मैच हार चुकी हैं, सिर्फ 1 मैच जीता था। अब देखना ये है कि क्या इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं। फिलहाल 3 टीमें पक्की हैं, अब देखना ये है कि चौथी टीम कौन सी होने वाली है। पाकिस्तान भी है, इंग्लैंड भी है, अफगानिस्तान की टीम भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों कोई भी पहुंच सकती है इस वर्ल्ड कप में, कुछ भी फेवरेट नहीं है। जैसा कि आज के मैच में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है।
तो नेक्स्ट मैच दोस्तों देखने वाले हैं कल के लिए, और क्या लगता है कल का मैच कौन जीतने वाला है। फिलहाल दोस्तों आज के मैच में थोड़ा सी और बात कर लें कि आज के मैच में यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने 284 रन किए 10 विकेटों के नुकसान पर, और इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 215 रन किए और पूरी की पूरी टीम चलती बनी, और इस मैच को अफगानी टीम ने 69 रन से जीतकर फतह हासिल कर ली है। बहुत ही शानदार फतह जिसको सेलिब्रेट करते हुए अफ़गानी लोग दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टीम को हराना कोई आसान बात नहीं होता जो अफ़गानी स्पिनर्स की मदद से यहाँ पर अफ़गानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें अफ़गानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया है। इतनी बड़ी टीम को यहाँ पर बहुत ही बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और अफ़गानिस्तान के स्पिनर ने यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को 215 रन पर ढेर कर दिया है। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है स्पिनर की तरफ से, और इस कमाल की गेंदबाजी की वजह से स्पिनर की वजह से ही दोस्तों इंग्लैंड की टीम मैच हार चुकी है अफ़गानिस्तान के हाथों। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली है। अगर बात करें दोस्तों आज के मैच की, तो आज के मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता था, और टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम ने अफ़गानिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। अगर बात करें अफ़गानिस्तान के बल्लेबाजों की, तो गुरबाज ने आते ही लाठीचार्ज करने का फैसला किया और 57 गेंदों पर 80 रन की दुमदार इनिंग खेली। इब्राहिम ज़ादरा ने 28 रन किए। रहमत शाह आज फिर नाकाम होते हुए दिखाई दिए। शहीदी ने 14 रन की इनिंग खेली, और इसी के साथ ही अजमतुल्लाह ने दोस्तों 19 रन की इनिंग खेली। इकराम अली खिल ने 58 रन किए, जबकि मोहम्मद नबी ने सिर्फ 9 रन किए। इसी के साथ ही दोस्तों अफ़गानिस्तान की टीम की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई थी। मुजीबुर रहमान की तरफ से 16 गेंदों पर इन्होंने 28 रन किए और अपनी टीम को लगभग 284 तक पहुंचा दिया। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स ने 4 ओवर्स में 41 रन दिए। बहुत ज़्यादा धुलाई का सामना करना पड़ा। रेस टोपली ने 8.5 ओवर्स में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसी के साथ ही सैम करन को बहुत ज़्यादा धुलाई का सामना करना पड़ा। 12 के इकोनॉमी रेट से दोस्तों 4 ओवर्स में इन्होंने 46 रन दिए। आदिल रशीद ने 10 ओवर्स में 42 रन दिए। मार्क वुड ने 9 ओवर्स में 50 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लिविंगस्टोन ने 10 ओवर्स में 33 रन दिए, और इसी के साथ ही जॉय रूट ने 4 ओवर्स में 19 रन किए। तो टारगेट था 284 रन का, और इंग्लैंड की टीम ने करने थे 285 रन। दोस्तों जब इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरी तो आते ही इनकी विकेट्स गिरने लगी। सबसे पहले जॉनी बेस्टो 2 रन पर आउट हुए फजल हक फरूकी के हाथों। डेविड मलान मोहम्मद नबी का शिकार हुए 32 रन पर, और इसी के साथ ही जॉय रूट की विकेट भी बहुत जल्द। रूट ने यहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 11 रन बना पाए। हैरी ब्रूक ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वो भी जोस बटलर भी नवी लिविंगस्टोन वो भी नाकाम रहे। लगातार दिए ने 9 रन किए। आदिल रशीद सिर्फ और सिर्फ 20 रन कर पाए। मार्क वुड ने 18 रन किए, जबकि रेस टोपली ने नॉट आउट रहे और 15 रन करने में कामयाब रहे। तो दोस्तों इसी के साथ ही इंग्लैंड की पूरी टीम 215 पर चलती बनी। अगर पॉइंट्स टेबल की यहाँ पर बात कर ली जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया की टीम यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो कितने मैच जीते हैं, 3 मैच खेले हैं, तीनों ही जीते हैं। पहला मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेटों से जीता था। दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी थी, और तीसरे मैच में इंडिया ने 7 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अब इंडिया और बांग्लादेश का मैच है 17 तारीख को। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन वाली टीम की दोस्तों, न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ चुकी है।
न्यूजीलैंड ने पहला मैच 9 विकेटों से जीता, दूसरा मैच 99 रन से जीता, जबकि तीसरा मैच 8 विकेटों से जीता था। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर यानी साउथ अफ्रीका की टीम की। साउथ अफ्रीका की टीम भी काफ़ी ख़तरनाक है और साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। पहले मैच में 102 रन से श्रीलंकन टीम को शिकस्त दी थी और दूसरे मैच में अफ्रीका ने 134 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की टीम की दोस्तों। चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम दिखाई दे रही है जो कल का मैच बहुत ही बुरी तरह से हारी थी। पाकिस्तान ने पहला मैच नीदरलैंड से जीता था 81 रन से। श्रीलंका से 6 मैच में बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लगभग 7 विकेटों से यहां पर पाकिस्तान की टीम हारी थी। और चौथा मैच दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 20 तारीख को होने वाला है, तो पाकिस्तान को वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर आगे जाना है। तो इसी तरह दोस्तों इंग्लैंड की टीम की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। 3 मैच खेले, 1 जीता और 2 हार चुकी है। इंग्लैंड की टीम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दिखाई दे रही है। पहला मैच 9 विकेटों से न्यूजीलैंड के हाथों से हारा था। दूसरे मैच में बांग्लादेश के हाथों 137 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और तीसरे मैच में 69 रन से अफगानिस्तान के हाथों आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चलें इंग्लैंड की टीम बहुत ही बुरी तरह से 2 मैच हार चुकी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम बाहर भी हो सकती है। और इसी के साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान की टीम 6ठे नंबर पर आ चुकी है। 3 मैच खेले, अफगानिस्तान की टीम भी 2 मैच हार चुकी है और सिर्फ 1 ही मैच जीता है। पहले मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वो भी बांग्लादेश के हाथों। दूसरे मैच में 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वो भी इंडिया के हाथों। लेकिन आज अफगानिस्तान की टीम ने सबसे तगड़ी वाली टीम को हराया है, यानी इंग्लैंड की टीम जो 2019 के वर्ल्ड कप की फातेह थी, लेकिन आज अफगानिस्तान के हाथों हार चुकी है। इसी तरह दोस्तों बांग्लादेश की टीम यहाँ पर 7वें नंबर दिखाई दे रही है और इसी की तरह दोस्तों नीदरलैंड की टीम 9वें नंबर पर, जबकि दुनिया की बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पर दिखाई दे रही है। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच भी है दोस्तों 20 तारीख को। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? फिलहाल आपको बताते चलें टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी। पहले नंबर पर फिलहाल इंडिया की टीम है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जबकि चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि आज के मैच में अफगानिस्तान की टीम ने दोस्तों इंग्लैंड की टीम को बहुत ही बुरी तरह से बीट किया है, लगभग यहाँ पर बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है, 69 रन से हरा दिया है। अफगानिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 284 रन किए थे। अफगानिस्तान की टीम भी पूरी की पूरी आउट हुई थी 49.5 ओवर्स में, जबकि इंग्लैंड की टीम ने दोस्तों बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया और पूरी की पूरी टीम अफगानिस्तान के जादूगर स्पिनर्स का शिकार होती हुई दिखाई दी। और अब बताते चलें अब बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, लगातार 2 मैच हार चुकी हैं, सिर्फ 1 मैच जीता। देखना ही है कि चौथी टीम कौन सी होने वाली है। पाकिस्तान भी है, इंग्लैंड भी है, अफगानिस्तान की टीम भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों कोई भी पहुंच सकती है, इस वर्ल्ड कप में कुछ भी फेवरेट नहीं है। जैसा कि आज के मैच में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो नेक्स्ट मैच दोस्तों देखने वाले हैं कल के लिए, और क्या लगता है कल का मैच कौन जीतने वाला है? फिलहाल दोस्तों आज के मैच में थोड़ा सी और बात कर लें कि आज के मैच में यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने 284 रन किए 10 विकेटों के नुकसान पर, और इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 215 रन किए और पूरी की पूरी टीम चलती बनी। और इस मैच को अफगानी टीम ने 69 रन से जीतकर फतह हासिल कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया है। इतनी बड़ी टीम को यहाँ पर बहुत ही बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अफगानिस्तान के स्पिनर ने यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को 215 रन पर ढेर कर दिया है।
कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है स्पिनर की तरफ से, और इस कमाल की गेंदबाजी की वजह से, स्पिनर की वजह से ही दोस्तों इंग्लैंड की टीम मैच हार चुकी है अफगानिस्तान के हाथों। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली है। अगर बात करें दोस्तों आज के मैच की, तो आज के मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता था, और टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम ने अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। अगर बात करें अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की, तो गुरबाज ने आते ही लाठीचार्ज करने का फैसला किया और 57 गेंदों पर 80 रन की दुमदार इनिंग खेली। इब्राहिम ज़ादरा ने 28 रन किए, रहमत शाह आज फिर नाकाम होते हुए दिखाई दिए, शहीदी ने 14 रन की इनिंग खेली, और इसी के साथ ही अजमतुल्लाह ने दोस्तों 19 रन की इनिंग खेली। इकराम अली खिल ने 58 रन किए, जबकि मोहम्मद नबी ने सिर्फ 9 रन किए। इसी के साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान की टीम की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई थी। मुजीबुर रहमान की तरफ से 16 गेंदों पर इन्होंने 28 रन किए और अपनी टीम को लगभग 284 तक पहुंचा दिया। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स ने 4 ओवर्स में 41 रन दिए, बहुत ज़्यादा धुलाई का सामना करना पड़ा। रेस टोपली ने 8.5 ओवर्स में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसी के साथ ही सैम करन को बहुत ज़्यादा धुलाई का सामना करना पड़ा। 12 के इकोनॉमी रेट से दोस्तों 4 ओवर्स में इन्होंने 46 रन दिए। आदिल रशीद ने 10 ओवर्स में 42 रन दिए। मार्क वुड ने 9 ओवर्स में 50 रन देकर 2 खिलाड़ियों को